education and improving health status of adolescent girls. She is actively involved in scientific committee member and reviewer of the conferences and journals, and serve as expert and examiner for university admissions and medical examination. So with these words, we welcome you, madam, to the department short-term course. Really, we are very much grateful and thankful to you for sparing your time from the valuable engagements. So with these words, once again, I welcome you and express my thanks. So now I will request you to please share your experiences with our participants. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Naseem. Thank you so much for honoring me and giving me this opportunity to interact with so nice people. And I think more than 50 people have been connected with us. So it's More very than 55 more and than 55, yes. another So it's another person will also join them. okay. So it's very difficult to get everybody's introduction. But in total, I think all of them are lecturers, assistant professors. Yes, yes, they are the assistant professors from the various disciplines. Okay, okay, And the librarian also there. Some okay. research scholars are also Some there. research scholars are also there. Okay, so I'll Okay. try to tell everything in a simplified way so that if even if you are not expert of community medicine or public health, you get to what I am saying. And everybody is welcome to interact, give me their opinions, and tell me about their understanding of whatever I tell. And we'll discuss everything in between also. So I'll start by sharing my presentation. So I'll be talking about is it visible to everybody? Can everybody see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I try to bring it to a sorry. I'll again I don't know why it's not coming to slideshow mode. Moving somehow. Ma'am, you have selected window. Please select the entire screen option. Okay. Please, firstly, just stop presenting and then open present now. Yes, entire screen. Yes, entire screen. Then click on the small window I and then share. but in an entire screen I cannot see my presentation. In No, no, window, no. You just click on the window and then share. Now open your presentation. You will see it. Open your presentation. my presentation is all already opened on the. No, no, in front of you. In front of you. Just open in front of you. So can you see now? Yes, ma'am. Perfectly fine. Okay, but now I cannot see anybody. So please be vocal so that I can know that I am interacting with somebody. It becomes very monotonous that you are speaking to a wall. So today, am I not very fast now? If am I very fast, then please tell me. Today we'll be talking about community mobilization actually. And I personally would like to tell you something about it through the Pulse Polio program implementation. I hope everybody knows what is Pulse Polio program or what was Pulse Polio program. Can I get some answers? Yes, ma'am. So most of you must have witnessed this some part of this program in your career or student life or wherever you were. Am I right? Okay. So what is community mobilization actually?
collective effort of community members and stakeholders to achieve a common goal. This is the definition of community mobilization. Now, we all of us know what is a community. Can anybody tell me what is a community? Either you can define it or maybe you can tell it in your own words. I want 2 or 3 answers from all of you. Please first introduce yourself and then tell me what is a community. I can listen to you. I cannot see you, but I can listen to you. Anyone? Am I audible? Am I audible to? Okay. So I want 1 or 2 hearing. What is a community? Group of people living together with some common goals. Not all. Okay. Very good. Somebody else? Anybody can give an example of what is happening just now, like between us? Having same goals, a group of people having same goal or having same mindset. Okay. Having your good name, please. Ma'am Manjeet, Professor Manjeet. Manjeet. Ji, Professor ma'am. Manjeet is right. Having common goals. I can share with you at present, we all of us are a community of learners. Are we not? We want to Yes, learn ma'am. something and we have formed a community. We have a common goal that we want to learn something. We want to know something about something. So this is a community of learners. So community is a community mobilization is a collective effort of community members. Now, when those community members and the stakeholders, who are the stakeholders? People who are involved and responsible for certain changes along with the community. All of them work together to achieve a common goal. Then we call it as community mobilization or activity of doing something. Now, what is the importance of this mobilization? Why are they important in our public health programs? You know what are public health programs? Anyone? So I'd like to see you also. I'd like to stop sharing and let's discuss and then we can say something. What are public health programs? You can give me a layman definition or whatever you. If you can open your cameras, it's very nice. But if there is net problem, then I don't mind. Yes. Anybody? What is a public health program? See, it's not a question answer session. It's just that we interact and we talk to each other and we understand. So we have so many people. Priyadarshi Meshram, I can see your name. S.I. Agand, I can see your name. Anybody? Manavendra Burman, Rashmi Sahu. So I'm taking so many names. Yes, anybody can tell me? Anamika, you are visible to me. Dr. Anamika Saxena. I can see you. So you know something about public health programs, Dr. Amina? Yeah, actually, see, ma'am, I think it's a public health programs is work to provide, and protect the health of people or the communities we live. Yes, very right. It's about the communities, it's about the people and providing healthcare and protecting And their the protective there. Yeah. That's a public health program. Public health program is any program related to some part of health, which is basically applied on the whole community. And it brings about a positive change in the health of the people. And of course, it's something to protect the people. So very good. It's called a public health program. Now, so it's very difficult to share. So what I'm going to do is
I'm going to start my presentation now. I have to talk to you people by saying, can you see the presentation now? Okay. So, public health programs, what is the importance of community mobilization in implementation of any public health program? It fosters the community ownership of health initiatives. Now, whatever health initiative, for example, we took the health initiative of pulse polio immunization, that we will immunize, give a polio, give 2 drops to every child in our community of a specific age. So that was our aim in the pulse polio program. So when we involve the community, we involve the peripheral people, then it gave ownership to the that health initiative to the community, that कि ये हमारा program है, this is our program, we are going to immunize our children. So when you involve those people into the program, उनको लगा हमारा program है और आदमी अपना काम बहुत अच्छे से करता है, उनको लगा हमारा काम है, हमारी हेल्थ के लिए है. अगर हम उनको नहीं इन्वॉल्व करते और कोई चीज we just put that thing over them that you have to do it, you have to do it, then it was very impossible. You gave them the ownership, you told them it is your program, you get us involved, you get yourself involved with that program, and we'll help you. Second, because of the involvement of community, of the people of the community, and because they took the initiative and ownerships, you had a long term viability of program. मेरे ख्याल से started in 1995. I suppose I was a first year MBBS student at that time, and it's in so many years the program was viable. Still, it is going on in some places where there is risk. Okay, and it did not stop. It increased the coverage. It increased the frequency of vaccination. And first we had 1 strain, then we had 3 strains, then we tailored those strains of polio according to the areas where whichever strain of virus was present. So all those changes in the program and all that initiative was long term. And because it was in people's hands, so the viability of that health program was for a long time. Then we have a diverse community of people in India specifically and in the world also. आप देखते होंगे आसपास कितनी तरह के लोग होते हैं, सबके अपने कल्चर्स होते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं. Then some are educated, some are uneducated, some live in rural areas, some live in tribal areas, some live in urban areas. So they have their own perspectives, own thinking. So when you involve their representatives, you have a diverse community effect. अगर एक जगह आप रहते हैं, अपने घर के आसपास देखिए, आपका घर होगा, कुछ काम वालों का घर भी होगा, आपकी जो बाई आती होगी उसकी झोपड़ी भी वहीं कहीं होगी, उसके अलावा आपके चौकीदार का भी वहीं होगा. तो वो डिफरेंट स्टेटा हो गया सोसाइटी का, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ले लें. नाउ व्हेन यू इन्वॉल्व देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन एनी हेल्थ प्रोग्राम, उनके घर से भी एक ले लिया, उनके यहाँ से भी एक ले लिया, लाइक उनकी कोई सोशल वर्कर हुई वो ले ली, अपना इन्वॉल्व कर लिया अपनी कम्युनिटी को. तो व्हेन एवरीबडी हैज अ रिप्रेजेंटेटिव, so you can implement or you can do the work of health policies on all that community with their involvement. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव लें, भाई तुम्हें ये काम करना है, क्यों सुनेगा वो आपकी, उसको लगेगा नहीं मेरी बात हो रही है, बिकॉज देयर कल्चर्स आर डाइवर्स. तो उनको अपने कल्चर को कोई आदमी दिखेगा, they will be more receptive to whatever advice that person is giving them. So that is, it encourages diverse community involvement and perspectives. और ऐसा ही पल्स पोलियो प्रोग्राम में हुआ. हमारे पास सोशल मोबिलाइजर्स थे उसमें, जो उन्हीं की कम्युनिटी से लिए गए थे, अगर आपको याद हो. There was a complete social mobilization network in pulse polio program. We used to go to slums and some people from slums were picked up. We used to go to rural areas and some people were picked up from the rural areas who were their representatives. Likewise, we had a diverse community of social workers who was mobilizing them, their people. Then all this correlates with a better public health metrics. Public health metrics has everything to do just with the implementation of the programs. So that improves. Then you are empowering the community. They can advocate for their necessities, their health policies.
Like आपको याद होगा कि पल्स पोलियो में people started to talk about civic amenities. That आप पोलियो का वैक्सीन के लिए तो हमें ले जाते हो, यहाँ का आप पानी तो है ही नहीं हमारे यहाँ पीने का. There were several areas where the government increased the civic amenities, gave them the civic amenities, because they wanted to get that area covered with pulse polio immunization. So they could put up their needs also. So when you are bringing those people at central to do any public health work, any implementation, you are giving them the power to communicate about their problems, about their perspective. So you are empowering those communities as a whole, because you are bringing in their representatives to a central level. This is one of the importance. Then focus. Focus is very important. You get a focused approach to your program or to your health perspective by mobilizing the communities. अब हर चीज को आप पल्स पोलियो से रिलेट कर लीजिए, आपको सारे आंसर्स और सारी इंपॉर्टेंस उसमें समझ आ जाएगी. It was because I am talking about pulse polio program, so just a little introduction about it. You can see two children sitting. Whatever child was immunized, they used to get a purple mark on their hand, on their little finger, just showing that the child has been immunized. So it was launched in India in 1995. There was a single day was selected every time, and on that day there was mass administration of OPV in the entire country. Initially, children less than 3 years were selected, and later on the age was increased to less than 5 years. And in 1995, there were 35,000 cases of polio in India, which later on decreased to nil, zero. The aim was to eradicate poliomyelitis by immunizing all children under 5. And we were declared polio free about 10 years back. So from 1995 to 2014, how many years? I want an answer. Just a maths question. Is everybody sleeping? और आप लोग स्क्रीन लगा के चले तो नहीं गए हो? थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए थी उसकी. How many years? Yes, ma'am. 19 years. So the viability of that program was 19 years. And it is still there in some areas where this problem is not gone. So this was about viability, and this was about the summary of that program. So this was an 18-month-old girl named Rukhsar Khatun from Howrah district, West Bengal. She was infected with type 1 polio virus, and she was the last case of polio in India. So on January 13, 2011, we found her. And then for 3 years, we did extensive pulse polio immunization. And in 2014, on observing for 3 years, we didn't find any other case. India was declared as polio free. Okay, so this was the end of polio. And everything was possible because of one factor, community mobilization, and nothing else. Now, how did we do it? कैसे करा? So what are the core elements of community mobilization? देखिए मुझे आप लोगों से ना आंसर्स चाहिए होंगे इसमें. पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में अगर हम बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सप्लोर द हेल्थ इश्यूज. आपके यहाँ है क्या हेल्थ इशू एंड सेट प्रायोरिटीज. So can you give me an example of your areas wherever you are living? Anybody? आप बताइए आपके यहाँ क्या आपके एरियाज में हेल्थ इश्यूज है. मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको फिर हटा के फिर लगाना पड़ेगा. I'll do that. Okay. You mean what type of disease we are facing now? The dengue and malaria during this season? Any health problem. You can have anemia. You very rightly said.
This is the season of dengue and malaria because of Yeah. And we are facing this such type of, health issues nowadays. It's okay, such type of health issues you are facing. Other yeah. people from other areas can tell because you are from diverse areas, so we can know what is happening in different parts of the country. So you are from your good name, please. Sorry, ma'am. Are you What is your talking? name and you are from where? Which Actually, place? I'm living in Aligarh. So, Actually, you are living in Aligarh. Okay, yeah. okay. This is a, she has rightly said, this is an important health concern of Aligarh. Yeah. Somebody I saw from West Bengal also. What is happening in your area? I think they are also the same problem. They are also facing not the dengue, but the fever, because I am Bengali, so I belong to West Okay. Bengal mainly. My that is my native place, Okay. so I know they are also the having this fever problem and throat infections like that. Okay, so viral diseases are prevalent in Uh-huh. those areas. Okay, so there can be some other areas like we have the hilly areas. Some hilly areas are having iodine deficiency disorders, like nutritional deficiencies. Some other areas are having different type of problems. So you have to explore the health issues. This I am see community mobilization works in every field. But today I am here to talk about the health issues. So if you set up a priority, for example, you have to do a vector control disease program implementation in our area because you are having the malaria and dengue nowadays. So you plan that with the community. You are at the nodal area. You are the nodal person. You know this is the problem. You have found out the problem in your area, and you want to focus on that problem. Now you will plan with the community. You will call them. Who will you call? You will call the local leaders or influencer. ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे जिनकी लोग बात सुनते हैं. जैसे हमारी एरिया में मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं कि ये वाले जो साहब हैं इनका ये मोहल्ला बहुत बात सुनता है, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं. आपने उनको बुला लिया या आपके वार्ड के कोई लीडर हैं, वो काम करते हैं वार्ड में, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़े हुए थे, जीत गए, सबने जिताया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, वो आपके हो गए. या फिर लोकल कोई लीडर है, लोकल हेल्पिंग लीडर्स होते हैं कि कोई काम करना है तो भाई इन्हें बता दो, ये करवा देते हैं. उन्हें आपने बुलाया. So you shortlist those people who have some kind of influence in that locality. You bring them out. Then we talk about how to control this disease. कि भाई पानी के गड्ढे नहीं भरे होने चाहिए, घरों में लोग चेक करें कि आपके घर किसी कूलर में पानी तो नहीं है, कहीं ऐसा पानी तो नहीं है जो डेंगू का मच्छर जो है वो सर्वाइव करता है and it produces there. And whatever risk factors are there, you want to take those risk factors out. You want to tell people कि आप पूरे कपड़े पहनिए, मच्छर ना काट ले, या मॉस्किटो नेट यूज करिए, या whatever the measures are there. You want to take all those measures to the community at the peripheral level. So you sit together with those leaders and then you go there and act together. एक तरह से they will form a bridge between you and the community. लोग उनकी बात सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे क्योंकि आप उनके साथ जा रहे हो, आप उनके साथ काम कर रहे हो. So you are acting together. अब जब आपने वहां काम कर लिया, आपको पता चल गया इतना हो सकता है, ये नहीं हो सकता. These people are very poor. हाँ, वाटर का they can take care. They cannot take care about mosquito nets. They cannot afford. For example, this is just an example I am giving. So what we'll do? We evaluated the situation and came. You correlate whatever I am telling with this cycle. So we are on the evaluate together point. We evaluated and we came out with this thing कि हमने evaluate किया है और पता चला है कि भाई ये लोग के पास मच्छरदानी तो नहीं है. अब क्या करना है? Now we prepared to scale up the situation. हमने ये सारी चीज करी, ये काम हमने कर लिया, हम पहुंच गए अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के पास, whoever was responsible. We just looked up, is there any provision where you could get a free what do you say, free mosquito net distribution from some program or policy. आपने उसको वहां से ढूंढा, निकाला और आपने उसको मीडिएट किया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया. Prepared to scale up.
और you mobilize those leaders कि आप हमारे साथ चलिए, and you organize that community, और उन्हें आपने सरकार तक पहुंचाया, and they explored the issues and came up with the solutions. So this was the cycle of community mobilization. आपने मच्छर कंट्रोल, आपने लोगों की डिजीज को कम तो कर ही दिया कुछ हद तक, अगर खत्म नहीं हुआ तो यू मैनेज द सिचुएशन। ये साइकिल आपने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का चला लिया। करा कैसे, आज से आपने करना कैसे है, विद कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। आपको बार बार उनके कांटेक्ट में आता है और उनसे कम्युनिकेट करते रहना होता है। ऐसा नहीं कि आप you went there and you call them and they immediately come के भाई डॉक्टर साहब आए फौरन चलो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको अपनी बात बार बार कहनी पड़ती है लोकल लीडर्स, इन्फ्लुएंसर, लोगों सबसे। कभी लोगों की समझ में नहीं आती, कभी कभी कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं वो नहीं करना चाहते वो काम। फॉर दैट यू गो एंड अगेन टू देम, यू मोबिलाइज देम, you talk to them, you change their behavior, you change their concepts। या चेंज भी नहीं करना है तो जो उनके बिलीव्स हैं उसी में कहीं ना कहीं आप ये प्रिवेंशन प्रिकॉशन फिट कर देते हैं। उसके लिए उनको बार बार एजुकेट करना होता है, अवेयर करना होता है, तो वो सब आप कम्युनिटी से ही करवाते हैं और उनके बीच ही करते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अच्छा, अब तक के जो मैंने बताया कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो? Let's talk now. I'll stop sharing, then we'll talk. Okay? We'll talk. अब बताइए, आप लोग कुछ ऐसा बताइए कि आपके आसपास कुछ ऐसा हो आपने कभी विटनेस किया हो। आप लोग किस चीज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इसके भी हैं लोग यहाँ पर? कोई कम्युनिटी में गए हो, कुछ आपने करा हो, कुछ आपने विटनेस किया हो? वी हैव 70 more than 70 पीपल विद अस। 2 या 3 स्टोरी तो कहीं से निकल के आनी चाहिए कि हमने ऐसा किया था। कुछ मेरी कहानी से सिमिलर आपकी कहानी हुई हो तो आप बताना चाहें। यस, थोड़ा सा इंटरेक्शन तो होना चाहिए क्लास में। ओके, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नाम लेकर पूछती हूँ। नाम भी कम आ रहे मेरी स्क्रीन पे, अभी देख लीजिए। ओके, आई हैव सो मेनी पीपल, है ना। ओके, आई हैव समबडी कॉल्ड एज लीना श्रीवास्तव। लीना, आप किस फील्ड से हैं? डॉक्टर लीना श्रीवास्तव, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Yes. आप किस फील्ड से हैं? Ma'am, I'm a PhD in botany. I'm associate professor in IES University, Bhopal. Okay, so I Yeah. can connect with you. My mother was a professor in botany in AMU. So Yeah. you are a botanist, that's very nice. Yeah, आप ma'am. ऐसा कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ कभी फील किया है? कोई नॉर्मल डोमेस्टिक भी हो सकता है आपका आसपास। हाँ, डोमेस्टिक तो खास ऐसा कुछ रहा नहीं है, मैम। लेकिन in my household only, I can say that these dengue and these type of diseases, what we are facing right now, we are taking all the precautionary measures and we are educating in our own family so that Okay. people, yeah, that we are. So I have no conversation between the community members as well. I have not gone to any of the places or the rural areas anywhere. But yes, we are trying to communicate in our own society and things like that. अच्छा, आप Yeah, किसी घर में रहते हो कि किसी फ्लैट में रहते हो? फ्लैट में रहते हैं मैम। तो आपकी फ्लैट एक में। कम्युनिटी होगी पूरे फ्लैट की। यस यस, सोसाइटी है आप मैम। अभी सोसाइटी में मोबिलाइजेशन करते हो कि ये फ्लैट वाले बिजली ठीक नहीं दे रहे हैं और हाँ पानी हाँ, ठीक नहीं दे रहे हैं? जी 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 मैम, जी वो मैम, स्टोरी एक सुनाइए ना कोई सी, वही है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। आप जी। सुनाइए, कुछ हुआ हो कोई इंसिडेंट आपके। कोई ऐसा इंसिडेंट मैम, राइट नाउ आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट। आई एम इन द ऑफिस प्रेमाइसेस, या आई एम इन द यूनिवर्सिटी। ओके ओके,
तो ऐसा Thank you, होता है ma'am. फ्लैट से रिलेटेड? थैंक यू सो मच। कोई और बताएगा? हम लोग की फ्लैट सोसाइटीज होती है, कुछ होता है, हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो धरना लगाते हैं, अपने सबको मोबिलाइज करते हैं कि ये रोड यहाँ प्रॉपर नहीं बना है, या ये लोग ने स्विमिंग पूल तो बना दिया है। हाँ, स्विमिंग पूल, या मैम स्विमिंग पूल का एक इंस्टेंस हुआ था, तो रेनी सीजन में स्विमिंग पूल, आई मीन विद दैट वाटर, रेन वाटर, इट वाज गॉट अप filled, and people used to not clean it, and that was an issue in the premises, and then many of us initiated, and then we cleaned up that. It was for around 2-3 months during the rainy season. It was quite raining this time in Bhopal, a lot of time. तो So आपने अकेले तो नहीं किया होगा, सब लोगों को नहीं, मोबिलाइज अकेले किया नहीं होगा किया कि था let's मैम. go We and got talk? it. Yeah, we got our the community helpers, we called Yes. them, and then we got it done. So Yes. this was Yes. one of the examples. Very good. Thank you so much, Dr. Leena. तो ये हेल्थ से Thank you, हट के ma'am. अलग कुछ हो गया। डॉक्टर रमन कलिता अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैन आई सी यू? आपकी मुझे छत नजर आ रही है बस। अभी आप कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर रमन कलिता, आर यू देयर? चलिए, एनीबडी एल्स? कुछ आपके सराउंडिंग में अराउंड हुआ हो? छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग म्युनिसिपैलिटी को अप्रोच करते हैं अपनी कम्युनिटी को स्टिमुलेट करके, दैट इज आल्सो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू आवर पोलियो। हम पोलियो की बात कर रहे थे, पोलियो पे आएंगे। मैं सीख गई हूँ, जल्दी से कर लूंगी। ओके, सो वी आर कमिंग टू पोलियो। अब हमारी कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जो ये सारी चीज इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, सो what were the stakeholders who were involved in that first polio program? कि हम उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले तो हमारा गवर्नमेंट था। See, political support is very important for the progress or implementation of any program, any health related program or any other program. अगर political support नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज तो हमारे गवर्नमेंट was in full support. Government in collaboration with NGOs like WHO and UNICEF, they were doing everything to get that program successful. और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारे जो स्लम के एरियाज थे जहाँ ज्यादा रीच नहीं थी, वहाँ गवर्नमेंट ने WHO यूनिसेफ के थ्रू छोटे छोटे क्लिनिक्स खुलवाए थे, जहाँ पे 5 साल से छोटे बच्चों को फ्री दवा मिलती थी। क्यों खुलवाए थे? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए, ताकि उन क्लिनिक्स के थ्रू आप उन एरियाज में अप्रोच करें जहां अप्रोच नहीं है हेल्थ ग्रुप्स की, और वो क्लिनिक में तो आएंगे ही बच्चों को दवा दिलाने, जब बच्चे को फ्री दवा आप दोगे। Then you could approach them, you could counsel them, you could get those areas vaccinated. So we had special clinics. Even our medical college, our Department of Community Medicine ran 2 clinics in the slum areas of Aligarh, who were very difficult to approach to go there. So we used to run those clinics, and with the help of those clinics, we got the community, local community people, and they mobilized the areas, and we got the whole areas vaccinated. So all these stakeholders and even community groups who were taking the responsibility, they are the stakeholders. Everything was working, everybody was working in collaboration. And as I told you, even civil works were being done just to facilitate the immunization. Like people were saying, you give us sanitation, you give us water, and we get our children vaccinated. So everything possible legit that should be there was being given to them to get the vaccination done. And then grassroots involvement, that is very important. जो आपके local बिल्कुल health workers, like ANMs, you have ANMs, you have ASHA workers, you have male and female health volunteers, you have teachers from schools. So जो बिल्कुल पेरिफेरी पे होते हैं, जो उन्हीं लोग के बीच में रह रहे होते हैं। आशा वर्कर कौन होती है? आपकी विलेज की कोई लेडी होती है। एएनएम कौन होती है? विलेज की लेडीज होती हैं। उन सबको इन्वॉल्व किया गया था उसमें।
जो बिल्कुल आपके घर के दरवाजे पे रोज बैठ सकता है जाकर, ऐसा आदमी इन्वॉल्व किया गया था। और इस सब में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी मीडिया की। मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ आप याद दिलाएंगे पोलियो से रिलेटेड? आपने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा था? देखिए, ये जो मेरी आपकी बात है ये बहुत ड्राई हो जाएगी अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है प्रेजेंटेशन हटाना, फिर आपको देखना, फिर सिलेक्ट करके कहना कि बोलो। इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एनीबडी ऑफ यू, बिकॉज वी हैव विटनेस दैट पल्स पोलियो प्रोग्राम, हम बता सकते हैं कि हमने क्या सुना था उसका। कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते सुनते थे हम, कुछ कोई कहता था कहीं पर भी? Ma'am, I कोई एग्जाम्पल आप? remember Amitabh Bachchan advertising for polio. वेरी गुड। देखिए कितना आपको एकदम से याद आया ना। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। एंड और बताएं, अमिताभ बच्चन और पोलियो से रिलेटेड थे, और कुछ देखते हो आप लोग? मैडम एक बूंद जिंदगी का। एग्जैक्टली, एक बूंद जिंदगी का ये स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत हुआ था। 2 बूंद जिंदगी थी वैसे शायद। दो बूंद जिंदगी। चलिए, बूंद तो थी वो जिंदगी की। कितना कितना वो चीज पॉपुलर हुई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और बहुत से लोग उसी के इन्फ्लुएंस में आकर कराते थे। ये आ गई आपका, कितना सही आपने बताया था। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो अमिताभ बच्चन जी को पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया इतना प्यार करती है कि उनकी बात सब मानते हैं। बिल्कुल। ये एक इन्फ्लुएंसर थे, ऐसे एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर थे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि ये बहुत कामयाब रही। तो की कम्युनिकेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज मीडिया से भी हो सकती है। पहले अच्छा एक चीज और थी, आपको याद होगा हर घर पे लोग जाते थे, डोर टू डोर कैंपेन्स। हेल्थ वर्कर्स ये इंश्योर करते थे कि हम हर घर जाएं, और हर घर पूछते थे आपके यहाँ कोई बच्चा है 5 साल से बच्चे, छोटा? हाँ, हम मेरे घर पे भी काफी बार लोग आए हैं। काफी बार लोग आए, और हम चिढ़ भी जाते थे कि ये देखो दोपहर में चले आ रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, शाम में चले आ रहे हैं, होता था ऐसा। सो दैट वाज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव और डोर टू डोर कैंपेन। कितना बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था कि हम हर दरवाजे पे जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे। फिर हमने क्या करा, बूथ डेज बनाए। क्या क्या बूथ डेज हैं? एक दिन होता था पूरा इंडिया उस दिन वैक्सीनेट कराता था, और हर जगह बूथ लगते थे कि भाई अपने बच्चों को ले जाओ और 2 बूंद पोलियो की पिलवा लो। फिर मास मीडिया हर अखबार में आता था, रेडियो वाले कहते रहते थे, टीवी में आता था। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स थे जिसमें से अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा था, और भी थे साउथ इंडिया में, शायद साउथ वाले कुछ लोगों के भी थे, मुझे याद है। और हर तरह का मीडिया यूज कर लिया गया था ये वाली स्ट्रेटेजी वो करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। बस एम ये था कि 2 बूंद जिंदगी की पिला दें। मैं आपको अपना भी एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं एमडी कर रही थी, 2002 की बात है, हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक कंसल्टेंट आई थी WHO की, यूएस से। अक्सर लोग आया करते थे, एलिस पोप नाम था उनका। अच्छा, यहाँ पर जो है एक घंटर चौक का एरिया है, घंटर चौक के लोग वैक्सीनेट नहीं करवाते थे। मतलब वो पूरा एरिया ऐसा था कि हम कराएंगे ही नहीं, कम से कम होंगे 50-60 घर वहां पर। तो एलिस पोप डिपार्टमेंट आती थी हम लोग को, जिसमें मैं भी थी और एक दो मेरे और साथी थे एमडी के, हमको लेके जाती थी। और हम लोग क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, and we were very much into it, so we were good communicators, good counselors. So she used to take us every day in her gadi, in her car, and we used to go there, visit house to house and communicate with people, and they agreed, most of them agreed। तो हम उन्हें वहां दवा पिलवाते थे, और रोज बहुत मेहनत हम 3-4 लोग करके 10-15 घरों में दवा पिलवा देते थे। तो वो इस तरह भी करते थे कि जो लोकल लोग हैं, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, आप एप्रन पहन के जाओगे तो लोग समझेंगे आपकी बात को। तो these stakeholders used to pick us also. Though our department was already into pulse polio immunization, our interns and everybody was going in the field, लोगों को समझाने पिलाने, मगर वो स्पेशल केस ये भी ले जाती थी कि जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट लोग हैं और जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उन्हें पिक कर लें। इस लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहा था। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? I heard a voice. And of course, we are all the part of a community, so this was also a part of
community mobilization. And now we'll talk about the engagement of local leaders and influencers. अभी मैंने आपको बताया था कि local leader या local influential people जो थे, we have to engage them. Okay. So whatever leaders, we have so many local leaders, influencers. One important one is the religious leaders. Like if in some place there is एक मंदिर है कहीं, तो they have pandits there जिनकी बात लोग सुनते हैं. मस्जिद है तो there is Imam Sahab. Whatever Imam Sahab is telling the people, they usually follow that. Okay, if church is there, then whoever is the person who is responsible for the church, and people go to him for confessions and everything. So he is the person that they listen to. So such kind of religious leaders were picked up. And as I told you, the community leaders, they were picked up. And first, a trust was created between them and the government. Then these influencers, they build trust with the communities, especially in marginalized and resistant areas. इनका क्या मतलब है? अब जैसे for example, slum areas तो खैर फिर भी inclusive है. Some tribal areas are there. I mean, there are some tribes in Andaman I have seen, if you agree with me. I have not seen them actually. So in Andaman, when we were going, then we were being taken through a road and we were told that either udhar the tribals will collect. Just take a look at them, don't stare with them, don't make any faces, and please keep your mobiles down. They don't want any interference with their lives by common people. In spite of that, I saw one or two of those, they were not even wearing clothes. They were wearing small things. So some normal people were bringing them somewhere. So I asked them, when we are not able to even talk with them, they'll kill everybody or they will not want the interference with their lives. With them also, there were some volunteers who were made a bridge, who could communicate with them and the society. So there were such kind of marginalized people and strictly resistant areas, because उस जमाने में आपने सुना होगा कि इस तरह की भ्रांतियां भी फैला दी गई थी सारे में कि पल्स पोलियो की दवा पीने से शायद इनफर्टाइल हो जाते हैं या क्या हो जाता है. तो कम्युनिटीज रेजिस्टेंट हो गई थी कि हम नहीं पिलाएंगे. और कोई भी चीज आप फोर्सिबली नहीं करा सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फोर्स ले आए और कैन बी नो. It has to be the will of the people and you have to give them with their own consent. So trust building was very important for these kind of communities, these kind of things. And then there are many case examples of such kind of influential leaders who were mobilizing communities. Okay. For example, आपको याद होगा Dr. Khalil from Meerut. याद है किसी को? He was a local medical practitioner. कहीं पे बहुत ही he was a respected figure. और जो उनका पूरा मेरठ का वो वाला एरिया था, वो सारे लोग उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि उनकी हर बात मानते थे. बहुत इन्फ्लुएंस थे. He was the person, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था उस एरियाज के बच्चों को वैक्सीनेट कराने के लिए. वो वॉलंटरली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, वैक्सीनेशन प्रमोट करने तक, और आज तक लोग उनको याद करते हैं. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर जो कि वहीं के लोकल थे और उन्होंने ये सारा काम करवाया था. So this was about engaging the local leaders and influencers. Now this is not applicable only to polio, because I am telling you all this, taking the case file of polio, because it was the most successful program that I have seen in my life. And in my मेरी जिंदगी में उससे पहले कोई वो स्मॉल बॉक्स का हुआ होगा, but I did not witness that. एंड इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यूज किया गया और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ही इसकी बेस थी एक्चुअली. Then there were polio awareness and education campaigns. We talked about media, and these media and these program were giving clear messages on immunization. वो ऐसी pictures दिखाते थे जिसमें आपने देखा होगा पोलियो ग्रसित बच्चे होते थे और ऐसा उनका ट्रीटमेंट भी दिखाते थे और कुछ छोटी छोटी
videos थी government के release हुई भी जिसमें the amount of handicap they have when they become adult and the amount of restrictions they have and the thing that they cannot lead a very normal life was being focused on those films. So that was clear message given to everybody that if you don't give polio vaccine to your child and if it all your child gets this disease, then what kind of future will that child have? So that was the thing which you can say imprinted on the minds of the people, and that was the clear message on immunization that was given. Then the second important part was overcoming myths and misconceptions. We remember at that time as an intern, as a medical student, our professor used to call us and give us a list of, see, these are the misconceptions that people are having in the community. We have a, in Aligarh, we have an area, Upper Court. Upper Court is a very famous area because in Western UP, Upper Court was the most resistant area in the northern India, you can say, where people were not giving vaccination. And there are so many myths about the vaccine. So we were given a list of that myth, and all of us were made into groups. And we were told that how to communicate with them and break these myths and break these misconceptions and stimulate them so that they could give consent for vaccination of their children. So that was one important part of our curriculum at that time. So this was how myths and misconceptions about vaccines were tackled with, along with people like us. Even media was talking about, papers were talking about, radio was talking about these things, and even in schools, in clinics, in community centers, if you used to go and sit there, there were ANMs, there were people, peripheral workers sitting there with people, and they were being told about breaking these myths and misconceptions. And from there, they took this message to their villages, to their areas. So this continuum of education through everything, this continuum of giving a clear message, all these things brought about mobilization of the community to give vaccination to their children. Now, if anybody has any confusion about anything that I have told you up till now, or you don't agree with me, you can always come up and we can discuss. So, should I move forward? Or you want to say something to me? Anybody? Ma'am, you can move forward. Okay, thank you. Then, what are the challenges in community mobilization? क्यों नहीं होता है कभी कभी? पोलियो की बात करें तो उसमें कल्चरल रेजिस्टेंस, वैक्सीन हेजिटेंसी, और कोई बात कर सकते हैं हम जहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी हुई हो? चलिए अभी थोड़ी सी बात ही करते हैं, मुश्किल काम कर लेंगे, हम फिर से शेयर कर देंगे। कोई बताएगा मुझे वैक्सीन हेजिटेंसी क्या चीज होती है? आप क्या समझते हो? ओके, आई अगेन स्टार्ट आस्किंग। मैं बुरी वाली टीचर रहती हूँ जो पूछती है बच्चों से। So Manjeet Kaur, you want to tell me something? Ma'am, I think when people are reluctant to have that medicine or vaccination, they are Yes. hesitant of that. They are hesitant. अभी कुछ हुआ था ऐसे जिसमें वैक्सीन Corona हेजिटेंसी? में, ma'am, for example, in Corona, we all were hesitant. Very good. That is what I was wanting to come to. So Corona में everybody was hesitant. Even I was hesitant about taking vaccination. और first round में हमने यहाँ पे किसी ने vaccination नहीं लिया था. Yes, And ma'am, it was made compulsory for everybody. Then we have taken it. then we have taken it. And then Yes, we ma'am. believed in that, and then also some people were not taking. So vaccine Yes, ma'am. hesitancy is a very important thing, and it was a, again in Corona also, what was the method that the hesitancy decreased? क्यों खत्म हो गई वो, मतलब क्यों हम लोग लेने लगे वैक्सीन? कोई बताइए।
कुछ ऐसा हुआ कहीं बताया गया? Excuse me, ma'am. यस पूनम, Ma'am, I think because it was widely spread, it was communicable. So effects, than expectations, it was rapidly uh, spreading than the expectation of Please, people. right. It So was severe rapidly consequences spreading. की वजह से हम लेने लगे हैं. यस, यू आर वेरी राइट. इतने लोग बेचारे, फेटालिटीज इतनी होने लगी, लोगों की डेथ होने लगी. ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग मैसेजेस कि गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया और ऑफिशियल भी हो गया, वो अलग मैटर है. बट स्टिल हमने अपने मेडिकल कॉलेज में, एंड इट वाज वेरी सैड, 2 or 3 of our very senior professors, our teachers expired. Like एक दिन, एक दूसरे दिन, एक तीसरे हफ्ते तीसरा, मतलब it was like everybody is going away. So then people panicked. Then they had a notion that we should take the vaccine. So like this things were happening. Excuse me, ma'am. So cultural resistance, of course. कल्चरल रेजिस्टेंस बहुत तरह की होती है कि हमारे यहाँ तो भाई लोग लेते नहीं है, हम दवा नहीं खाते तो हम नहीं खाएंगे. क्या हम यूनानी दवा खाते हैं? हम अंग्रेजी दवा लेते ही नहीं, कभी खाई ही नहीं हम. या हम जो है आयुर्वेदिक लेते हैं, हमेशा हम लेते ही नहीं. सो ये सारे चैलेंजेस आते हैं. आप ये सोचिए कि नॉर्मल डिलीवरी की हम अगर बात कर लें, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Excuse me, I need to. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात कर लें और आप जाएं कम्युनिटी में, आई हैव बीन टू मेनी हाउस होल्ड विच से कि हमारे यहाँ तो कभी मेडिकल जाकर डिलीवरी हुई नहीं, सबके घर में होती है, इनमें क्या खास है भाई कि आप कह रहे हो कि मेडिकल ले जाओ? सो थिंग्स लाइक दिस आर देयर. इट्स कल्चरल प्रैक्टिसेस. They deliver at home. It is not a practice for them to hospital, and they will not take. So there you need community mobilization. And barriers, coming to geographic and social barriers in reaching remote areas. This is very important. एक पिक्चर भी बनी है, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा. Some good person was there. His wife was pregnant and she expired because there was a big mountain between his home and the hospital facilities, and he couldn't cross that mountain with her, and she expired. Then he took Dasrath Manjhi. Dasrath Manjhi, yes. So for how many years he dug up that mountain to make a road till the hospital? I don't remember, 2 or 3 years. No, many years. Many years. He built a road till there. So that is the type of mobilization we want from the community. Okay. So that is geographic barrier. Like this, you have people in hilly areas who cannot readily come down to some health facility or people there. Okay. So there are social barriers. That was the social barrier I was talking about, that we don't go. Cultural social barriers. Okay. The society doesn't want it. They don't accept it. Then you should have some strategies to overcome these challenges. How will we go there? One example is written. We had mobile vaccination units. We have mobile clinics also. Okay. And you must have seen पोलियो की कहानी आपने देखी है, लोग बोट में रख करके पोलियो वैक्सीन का डिब्बा ले जा रहे हैं. बहुत बार देखा होगा आपने. Areas which are cut off because of the water bodies, हाँ उसमें बोट में ले जाते हैं. So if you want to reach some areas, you have to come up with strategies. You have to come up with things that you break these barriers and you widen the bottlenecks and you reach there. So there are challenges, और वही challenges को break करना ही एक आपके लिए बहुत achievement की बात होती है. Then very important is monitoring and evaluation and mobilization. Monitoring और evaluation वैसे important होता क्यों है? कोई बताए किसी भी चीज का एक मॉनिटरिंग आप लोग करते हो, इवेलुएट करते हो, तो मतलब कॉपीज भी आप इवेलुएट करते हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को तो इवेलुएट करते, क्यों करते हैं हम? व्हाट इज द नीड? Ma'am, may I? यस, योर नेम, योर गुड नेम? Ma'am, my name is Dr. Bhavna Singh. I'm from Okay. Meerut. ओके. मैम एवल्यूएशन और मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है कि भी किसी भी काम को कितना % हमने अचीव किया है वो एवल्यूएशन
और मॉनिटरिंग के थ्रू ही हमको पता चल पाता है मैम। वेरी गुड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम एक्चुअली जो करना चाह रहे हैं, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, क्या हम वो कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एग्जाम इवेल्युएशन क्यों कर रहे हैं? आप जानना चाहते हैं कि आर दे लर्निंग व्हाट वी वांट देम टू लर्न, और व्हाटएवर एल्स वी आर गिविंग देम, आर दे गेटिंग इट? अगर आपका एक एवरेज रिजल्ट क्लास का अच्छा है, मतलब यू आर फुलफिलिंग योर एम, दे आर गेटिंग व्हाट यू वांट टू डू। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो यू विल गेट अ फीडबैक, अच्छा बच्चा इस तरह समझ नहीं रहा है मेरी बात, तो इवेल्युएशन में आ नहीं रहा है रिजल्ट, तो मैं अपना तरीका बदल दूं। उससे क्या करेंगे, बच्चे से फीडबैक ले लीजिए। ऐसे ही जब आप हेल्थ प्रोग्राम को लेके कम्युनिटी में जा रहे हैं एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल, कैसे पता चलेगा? आपको वैक्सीनेशन देना था, आपकी 20% ही पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो पाई, आप 80% का एम लेके गए थे, तो क्यों नहीं हुआ 80%? आप वहां जाओगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे, मोबिलाइज करोगे, यू विल गेट फीडबैक फ्रॉम देम। वो भी मोबिलाइज करने पे आएगा कि भैया क्या परेशानी है, दे टेल यू कि हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपकी वैक्सीन से हम बीमार पड़ जाते हैं, या आपका वर्कर ठीक से बात नहीं करता है, बदतमीजी करता है, या हम आते हैं हमको वैक्सीन होती नहीं है, या फिर हम बिलीव नहीं करते वैक्सीन में, या वैक्सीन के नोशंस है कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। जो भी उनका रीजन था, वो आप तक आया। कैसे आया? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू ही आपने एक लूप बनाया, आपने सिचुएशन मॉनिटर करी, इवेलुएट करी, यू ट्रैक्ड देयर इम्यूनाइजेशन रेट, जो गैप्स थे उन्हें कैसे कवर करना है, ठीक है। आपने उन सब स्ट्रेटेजीज को अपनी फिर एडजस्ट किया, वही वक्त पे एडजस्ट किया इन रियल टाइम, कि इनका ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे स्ट्रेटेजी देंगे, इसको हम ऐसे देंगे, इसको हम ऐसे डील करेंगे, इसे ऐसे डील करेंगे। सारी चीजें आपने डील कर ली एंड देन यू आर सक्सेसफुल। किसी भी चीज में यू शुड हैव अ फीडबैक, एंड यू गेट अ फीडबैक, यू करेक्ट द स्ट्रेटेजी। इस सब के लिए मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग इसलिए भी जरूरी है कि वट एवर यू आर वांटिंग, इज इट बीइंग डन इन रियलिटी और नॉट? आपको नोशन ही आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। Until unless you monitor, you evaluate, no program can be successful. So this is a very important part. Then what is the role of volunteers? हमने volunteers की बात करी थी in mobilizing communities. मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। पल्स पोलियो की स्ट्रेटेजी थी, mostly our ASHAs and ANMs, and these were the workers who were the front line mobilizers, you can say, who were present. They were from the community, from the same community. So there was a very important role of them in educating the families, in tracking the immunization and building trust, of course. They used to track कि यहाँ हो गया है और इस घर में नहीं हुआ है, इस घर में इस बच्चे को हो गया, इसको नहीं हुआ है. So they were the bridges of building trust. अब होते ना वो गांव वाले की तो चाची मामी नानी वही लोग थी, भाई चाची ने कह दिया तो लगवा लो, ट्रस्ट उसमें है ना, आपके वैक्सीन में नहीं है. So they were the people who were the trust bridges between you and the community. Then recognition, it is very important. उनको क्या मिल रहा है, क्या आप उसको उसके बदले दे रहे हो? उनको एक रिवॉर्ड, एक रिकग्निशन जो मिलता है, that improves their trust building with the community. And of course, ASHA workers were the main people who had significantly contributed to vaccination, and I think some kind of monetary relief was also being given to them for this purpose. And we can see through our case studies that in regions where ASHA workers were actively involved, there was a marked increase in number of children vaccinated compared to the areas where they were not engaged. So this is how we come up with the point that ASHAs are more effective. And of course, their collaboration with the local leaders and influences enhance their credibility and the credibility of their messages, and making the people more receptive to vaccination. So this slide is dedicated to ASHAs because there was a definitive role of ASHAs, and it has been proved in some of the case studies who have been published in very good journals.
then how do you sustain this engagement? अच्छा ठीक है, हम गए, हमने वैक्सीनेशन करा लिया, पूरी कम्युनिटी करा लिया, अब अगली बार भी तो कराना है. अब इसका सस्टेनेंस कैसे होगा? फॉलो अप कैंपेन्स होते हैं. ओके, वंस यू हैव गॉन देयर, आपने वैक्सीनेशन करा दिया, भाषा उसके बाद भी तो गई उनके पास, और कैसा है बच्चा आपका, और उसको बुखार तो नहीं आया, ठीक तो है. इफ यू नीड अ पैरासिटामोल, यू कैन गो देयर, यू कैन गो हियर. एक खैरियत लेने, उसको फॉलो अप करने गई. सॉरी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट बिल्डिंग में, इफ यू गो देयर, you do a work and you leave the community, they will never come back to you. उनकी खैरियत लेने भी जाना होता है, बाद में पूछने भी जाना होता है, and whatever problems they have faced after that event, you have to manage and strategize those things. They have to come out of that problems, because they have to be ready for the next step. So that is follow-up campaign. This mobilization for other health programs also. So in parallel with this pulse polio program, so much effort was put into it, so much was being done for it. Other programs were in parallel being leveraged with this. So sabhi ka there was advantage for everything. Then this is the final slide, and this shows that what happened after the successful community mobilization in pulse polio program. Number 1, कम्युनिटी एंगेजमेंट का जो रियल मतलब है वो हमें इस प्रोग्राम के बाद ही समझ आया. सो इट इंक्रीज द कम्युनिटी एंगेजमेंट. सो in numbers, if you can see, there is an index called as community engagement index. So it raised by 7.2%, where in areas where community mobilization was being done, if you compare with the non-interventional areas. So this was one result out of this mobilization program. Then high vaccination coverage. There was a significant high number of households that participated in vaccination campaigns and got themselves vaccinated due to these community mobilization initiatives. So they translated a significant increase, this knowledge, this mobilization, this stimulation from non-immunized to immunized children. Then third thing, very important, was whatever vaccine resistance was there, for whatever causes, it decreased significantly in each supplementary immunization activity or days which were being formed. So where the previous community refusals were there, so this thing decreased. So 3 main things happened after community mobilization in pulse polio program. 1, community engagement increased, coverage increased, and resistance decreased. And all this thing was carried on for a long time, this viability was long, and in the end we came to the end of polio in 2014. So this is the end of whatever I wanted to say about community mobilization. I think this was the last slide. No, we have a role of influencers also. I'm sorry. Then influencers, we have talked about the influencers, their role and how they did what, and their communication strategies we have also talked about. Then of course CMCs हुआ करते थे, अगर आप लोग को याद है, community mobilizing coordinators, like I was talking that specific people were picked up from these local communities and who were influential, and they effectively engaged families. और बाद में हमने इन CMCs को और हेल्थ प्रोग्राम्स में लगा दिया, क्योंकि उनका पोलियो में इतना होल्ड हो गया था उस कम्युनिटी पे कि उसके अलावा और भी हेल्थ प्रोग्राम्स इनकी वजह से सक्सेसफुल आज तक चल रहे हैं. So it was basically a collaborative effort between the CMCs, the local influencers and community members, and this everything was a part of community mobilization that we came to the end of this polio disease. So ये सारी चीजें उसमें आ गई, बहुत सारी चीजें आपको समझ, मतलब मेरे ख्याल से 50-60% तो हर एक को समझ में आए, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप फॉलो भी करना चाहेंगे. प्लीज डू इट इन योर लाइव्स. ये आप प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में भी, अपने अराउंड में भी लगा सकते हैं. ओके.
Now we have, I think 10-15 more minutes. I'd like to dedicate to question answers जो मैंने छोड़ा था end के लिए, and I'll stop sharing the screen. And I'd like to know what do you think about everything that we have talked about today, or anybody wants to talk about some specific case or what's the communication? Anyone wants to share? सब भगाना चाहते हैं मुझे, सब कह रहे हैं थैंक यू मैम, बस जाइए, बहुत देर हो गई। आप जाइए। असल में आज थर्ड लेक्चर है, तो शायद मुझे लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने खत्म कुछ छोड़ा कर नहीं है ना, आपने सब कुछ बता दिया, तो छोड़ा ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे सोचते हैं भारत, तो ठीक है, तो फिर आप मेरे ख्याल से 10 मिनट्स ब्रेक ले लें। अगर डॉक्टर ताहिर आप चाहें तो मैं ब्रेक ऑफ कर लूं, बट इफ समबडी वांट्स टू हैव अ डिस्कशन आई कैन। हाँ नहीं, अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्लेरिफिकेशन, तो मैम के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। और अदरवाइज जो मैम ने इतना अच्छा लेक्चर दिया है, इतना डिटेल्ड में हर चीज बताई है, क्योंकि मैम को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है कम्युनिटी वर्क में, खासतौर से, और पर्टिकुलरली पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम में तो एक बहुत ही बड़ा टास्क चैलेंज था हमारी कंट्री के सामने, जिसको हम लोग ने जॉइंटली हैंडल किया और इफेक्टिवली उसको खत्म किया। हाँ, मैं तो आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि अलीगढ़ और वेस्टर्न यूपी के एरियाज में बहुत रोल है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये 4 मेन डिपार्टमेंट थे। बल्कि हमारे जो एक वाइस चांसलर साहब थे, नसीम साहब, वो इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व थे पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कि उनका नाम ही वैसे कहना नहीं चाहिए, नसीम पोलियो पड़ गया था। Because he was so much into it, and so much dedication was through its part, उनके पार्ट से। और इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट की चेयरमैन थी, वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ अलीगढ़ पल्स पोलियो प्रोग्राम। प्रोफेसर जुल्फिया खान को एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था इसके लिए। सो वी ऑल वर वेरी मच इन्वॉल्व इनटू इट। और ताहिर साहब जानते हैं कि कितना फील्ड में ये भी गए। आप क्या होंगे, पूरे दिन फील्ड ही रहते होंगे आप। जी 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 जी। बहुत ज्यादा वो था यहाँ पर। हमारी यूनिवर्सिटी वाज अवार्डेड विद जिमी कार्टर अवार्ड। यस, जिमी कार्टर अवार्ड हमारे को मिला था। और मुझे नहीं लगता था ताहिर साहब की इससे अच्छा मैं कोई एग्जांपल ले सकती हूँ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का। इसीलिए मैंने इसको पिकअप भी करा, क्योंकि वैसे तो बहुत ड्राई सा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ना फील्ड में जाकर ही समझ में आता है। सही बात। तो मैंने सोचा थोड़ी सी फील्ड यहाँ ले आऊं, वो कोशिश थी मेरी। और आप नहीं लोग नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी चीजें आपने शेयर करी हैं, और हमारे पार्टिसिपेंट को बहुत समझ में आया है। जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे वो पूछ लिए लोगों ने, और काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका। सो थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस एंड इंटरेक्टिंग विद आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सर।